Yeah. आप जल्दी से go through कर लें please. Thank you. So far, the process of a single investment bank managing the issue has been discussed or well known. Khurram Sahab, in the event that there's a syndicate with one book runner, there is first of all, is there always one book runner? ऐसा ही होता है? आपके पास choices हैं. अच्छा, पाकिस्तान में तो जनरली एक ही बुक रनर होता है, लेकिन जॉइंट बुक रनर भी हो सकते हैं. हमारी ट्रांजैक्शन में जॉइंट भी होता है. हम जॉइंट लीड मैनेजर भी बनते हैं, जॉइंट लीड बुक रनर भी बनता है. अच्छा, okay. Is there a difference between the two? लीड मैनेजर का काम पूरा ट्रांजैक्शन को एडवाइस करना होता है. बुक रनर का मतलब सिर्फ वो बुक रन करता है उस दौरान, तो इसलिए हेंस द टाइटल बुक रनर. Achha, right. So, for example, when there is a syndicate formed of a consortium of banks or financial institutions or advisory companies, for example, say, a capital markets division of a bank or a firm or of another finance company, otherwise, in this event, what is the basis on which banks agree to form a syndicate? Like, is it okay, you're responsible to get 20% of the book filled, I'm responsible for 30%? Is it based on that? देखिए, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता रूल. All I can say is they have worked together previously and historically their partnership has worked really well. So essentially it's like a combining of distribution network. आपको लगता है कि वो अगर पाकिस्तान में कोई बंदा जैसे अगर कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन आ रही है पाकिस्तान में OGDC की, तो वो हमें जो है से फॉर एग्जांपल हम JPM के साथ कर लेते हैं, JP मॉर्गन के साथ, तो या तो मेरिल लिंच के साथ कर लेते हैं, क्रेडिट स्विस के साथ कर लेते हैं. तो वो लोकल पार्टनर देखेगा, लोकल पार्टनर में देखेगा किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि देखिए लोकली भी तो बेचना उस माल को. OGDC माइट बी ऑब्वियसली अ वेरी हैवी वेट ट्रांजैक्शन है, लेकिन लोकली भी उसका बहुत ज्यादा प्रेजेंस है. तो लोकली हमें वो अपॉइंट कर देता है कि भाई अब लोकल लेग देखें और हम इंटरनेशनल लेग देखते हैं. तो एक ये स्ट्रक्चर होता है. हमने के इलेक्ट्रिक प्राइवेट ऑफरिंग की थी, तो हम वी वर द local advisors to K Electric for the domestic portion, whereas the remaining portion was sold by Citibank in the international market. Right. तो वो करते हैं कि आप क्या synergy लेकर आ रहे हैं. Okay. जी. I hope made it clear. अच्छा जी, अब सिंडिकेट क्या है देखिए. ये स्ट्रक्चर जो है ना पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट नहीं है. 23 नंबर स्लाइड पर आ जाते प्लीज अशारो. Typical syndicate consists of what? A managing group, underwriting group, or selling group. The managing group is composed by book runner and the joint book runner. The book runner is responsible for due diligence, road shows, book building, allocation, and not surprisingly gets the largest portion of the fees. It is not uncommon to see multiple book runners, especially for largest IPOs. The underwriting group is composed by managing group and non-managing underwriters. The latter called managers. Manager underwrite part of the shares, the proportion of which is determined by the managing group. Finally, selling banks just put their best effort in selling the shares, but they do not underwrite the word or do not guarantee allocation. The syndicate concentration differs depending on the tranche. अच्छा, अब देखें इसमें इन्होंने डिफरेंट रोल्स बता दिए. सिंडिकेट में कौन कौन होता है. एक मैनेजिंग ग्रुप होता है जो कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन की सेंटिटी मैनेज करता है, व्हिच इंक्लूड्स अ बुक रनर. फिर अंडरराइटर जो सिर्फ प्राइमरीली कंसर्न विद द अंडरराइटिंग, और एक सेल्स वाला होता है जो कि नॉन कमिटल बेसिस पे सेल करता है शेयर्स को. ये पाकिस्तान में स्ट्रक्चर रेलेवेंट नहीं है. पाकिस्तान में सिंपल है, स्टैंड अलोन बेसिस पे भी हो जाती हैं और सिंडिकेट पे भी होती हैं. सिंडिकेट में इतना बड़ा सिंडिकेट नहीं होता. आप जो है एक रिलेटिवली रीजनेबल साइज एक सिंडिकेट बना लेते हैं और देन यू गो टू द मार्केट. सबको समझ आ गई जी?
अच्छा जी, अगली वाली स्लाइड पे आ जाते हैं प्लीज, 24 पे। Syndicate can potentially perform 4 different functions. Information gathering होती है, certification, research and market making. Information क्या है? Pricing and IPO is part art and part science. Very true. It's not a very easy job. Whatever the number Excel throws you, it might not be the right number. So you still have to look at various qualitative factors to come up with the final pricing. So the art consists in determining the market interest in the for offering. Different banks have different clients, and obviously covering different information. Banks involved in syndicate might use information also indirectly. Member who can also affect IPO pricing, whispering in the issuer's ear, telling the issuer that the book runner might misprice the IPO and that we would have done the better for you. तो obviously देखिए कंसोर्शियम में ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमारी अभी हमारा एक कंसोर्शियम है, उसका FF स्टील का आपने नाम सुना होगा, फ्रंटियर फाउंड्रीज की कंपनी है, पिशावर बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरर है. तो उसके अंदर हमने सिंडिकेट बनाया है. सिंडिकेट कंप्राइजेस ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, HBL, बैंक अल्फला और बैंक अल्फला CLSA. 4 लोग हैं. तो ऑब्वियसली उसकी अपनी ग्राइंड है कि हर दफा हर मीटिंग में सारे मेंबर्स को होना जरूरी है. या फिर आप कोई प्रोटोकॉल सेट कर लें कि भाई अगर कोई मटेरियल डिसीजन नहीं है तो मेरा मुझे एक्सक्यूज कर दें. तो दिस इज व्हाट इट इज. अच्छा, ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं सिंडिकेट सर्टिफिकेशन का. इट इज नॉट रेलेवेंट टू पाकिस्तान. अच्छा, इसमें जो रिसर्च वाला पार्ट है, वी कैन गो थ्रू दिस. अमंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सिंडिकेट मेंबर्स, आफ्टर मार्केट एनालिस्ट कवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट साइटेड. ऑब्वियसली जब आप एक कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद भी वो कवरेज में रहती है ताकि लोगों के दिमाग में वो रहे कंपनी, एंड दे कीप ऑन ट्रेडिंग. Corbin and Schultz found that each additional joint book runner increases the number of analysts covering the issue by 0. ये obviously different papers हैं जिसकी वजह से ये कुछ conclusion draw किए हुए. Investment bank with top rank analysts are more likely to be included in the syndicate. The strategy, okay, whatever. So there is also another aspect called market making. Market making इसलिए important है क्योंकि it also generates liquidity in the script. It's very very important. अब हमारा एक अपनी कंपनी लिस्ट हुई है जेम बोर्ड पे. It is struggling in terms of the liquidity issues. तो बड़ा important ये है कि आप जो है इसमें मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होना जरूरी है ताकि सही प्राइस कवरी हो सके. If the firm going public will be listed in a code-driven market, then the number of syndicate members positively affects the number of banks, whatever. ये conclusions draw किए हुए हैं, availability of the issue. I think let's skip this. This is very very theoretical. We don't need to go through this. अच्छा, debt offering वाला फिलहाल अभी I think let's park it a little in between. Let me just quickly go through the thing. One thing which I would want to obviously do it myself with you guys, which is called a voluntary delisting, which is slide number 65. Slide change करें. जी मैं कर रहा हूँ.